अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मेहमान-ए-खसूसी में डॉक्टर अख्तर संधू आपकी खिदमत अक्सद में हाजिर। सूद से पाक मुईशत और हमारी यूनिवर्सिटीज़ आज की गुफ्तगू का मौजू है और हाउ टू ब्रिंग एंड इम्प्लीमेंट इंटरेस्ट फ्री इकोनॉमी in Pakistan. And you know that universities are supposed to produce scholars, and especially on different aspects of life and society. So today we are talking about interest-free economy or product, and we have very prestigious scholars with us and special guest from United States of America, Professor Ihab Ashami. He is Chancellor of American International Theism University, Florida, and he has very strong and tremendous grasp over financial management and Islamic banking. Thank you and welcome to Pakistan. Thank you for having me. It's a great honor. Thank you. So second guest is Professor Mehmaan-e-Khasoosi. He is Rector of Talon Institute of Higher Studies. डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए। और तीसरे हमारे पास मेहमान हैं प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद शाहिद हबीब। ही इज़ अ प्रोफेसर ऑफ ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी रहीम यार खां। सो थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल एंड वी स्टार्ट विद प्रोफेसर इहाब अशामी। Yes. How can you compare your own economy, because basically you belong to Egypt, yes, and you are serving in United States of America, Florida. So how you compare the economy of your own country and with that of United States of America? We definitely have a lot of Islamic banks in Egypt. Either the whole bank is on the Islamic principles or it's a branch from one of the big banks in the system. We do have Islamic products, whether it's ijara or murabha or partnerships, musharaka. Compared to United States, we only have one bank in the United States in Michigan. So it's not a fair comparison between Egypt and United States. So do you think that being Muslim country and being Western country, there is a huge difference of concepts of economy? Concepts of Islamic products? Yes, Islamic banking and... Well, definitely we need Islamic products in our Islamic countries as well as in the United States. I think we have a very huge shortage of these products to be offered by the Islamic banks in Egypt or Pakistan or any of our Muslim countries, as well as in the United States. The biggest difference would be in the United States has 8 million Muslims, but they are ones that make a lot of money, so they can actually contribute a lot to the Islamic finance. डॉक्टर एजाज कुरैशी साहब कि जो इंटरेस्ट फ्री इकोनॉमी है, आप बिकॉज यू हैव बीन इन यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूनाइटेड किंगडम एज वेल, सो व्हाट्स योर एक्सपीरियंस कि वहाँ पे जो ये एक इंटरेस्ट फ्री इकोनॉमी है उसका कोई कॉन्सेप्ट या वहाँ पे कोई इसके रूट्स कोई ले रहे हैं, कोई दिलचस्पी वेस्टर्न, या ये सिर्फ इस्लामिक कंट्री या मुस्लिम कंट्रीज़ का फिनोमेना है? Professor Akhtar Sandhu, thank you so much for the opportunity to be your guest here. What I have seen, I remember I started my undergraduate program in UK in 1987, and you would be amazed to know this, that at that time many British banks were starting their departments in Islamic banking at that time, and when sure, great products were available in the market and many of them were going deep into that. So there is a tremendous growth in that because expats, those who are Muslim, honestly speaking, they are very strictly following the principles of Islam compared to when you look into the people living in the Muslim countries. So I have seen them, they are very seriously looking into if they are going for mortgage, if the mortgage is available from Islamic banking point of view,
they would prefer that. Even though it is sometimes little expensive compared to other products. I have seen Muslim friends going for that actually. Recently I met one professor from New Zealand, Caucasian professor, he was New Zealander, and he told me, he said he now consulting one company in New Zealand, and the company is employing over 80 employees, and they are promoting the Islamic interest-free products in the local economy, and said there is a very serious interest from the local population to go for that. अच्छा, ये डॉक्टर शाहिद हबीब साहब, ये अभी चंद दिन पहले या कुछ अर्सा पहले फेडरल शरिया कोर्ट ने एक फ़ैसला दिया है कि जो पाकिस्तान गवर्नमेंट को, रियासत को इसको इंश्योर किया जाए कि 2027 तक जो इंटरेस्ट फ्री इकोनॉमी है इसको इंश्योर किया जाए। आपके ख़्याल के मुताबिक ये हम जो माइलस्टोन है इसको हासिल कर लेंगे? अगर नहीं तो उसमें हर्डल्स क्या हैं? अगर यस तो कौन से आपको ब्राइट एस्पेक्ट्स नज़र आ रहे हैं कि हम इस मंजिल को हासिल कर लेंगे? बहुत खूबसूरत क्वेश्चन किया आपने। मैं आपका जवाब एक शेर से आगाज़ करना चाहूँगा। जी जी। नीयत हो नेक अगर गुलशन के निगहबानों की, किस्मत लालाव गुल आज भी बदल सकती है। वाह 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 वाह। तो कहने का मतलब है ये इससे पहले भी हो सकता है अगर नीयत नेक हो करने वालों की। और एक आप जैसा कि आप भी जानते हैं एक तवील स्ट्रगल हो रही है कि फ्री इंटरेस्ट का जो कॉन्सेप्ट है, ये ज़ाहिर है कि इस्लामिक बैंकिंग के हवाले से, और जैसा कि प्रोफेसर डॉक्टर एजाज कुरैशी साहब ने यूके के हवाले से बताया, तो उसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा मैं कि वहाँ जो मुस्लिम कम्युनिटी थी तो वो पैसे बैंकों में नहीं रखा करते थे। वो उनका कॉन्सेप्ट ये है कि वो सूद है। तो बाद में फिर यहूदी बैंक ने ये सर्वे कराया कि मुसलमान अपने पैसे बैंकों में क्यों नहीं रखते। उन्हें ये पता चला कि जनाब वो इसको सूद समझते हैं। तो ये बात आपको सुन के हैरानगी होगी कि सबसे पहले यहूदी बैंक ने इसका आगाज़ कराया कि इस्लामिक बैंकिंग का स्टार्ट करना ताकि लोग पैसे हमारे पास रखें, और फिर वो स्टार्ट हो गया। और उसके बाद फिर इस्लामी दुनिया ने इनिशिएटिव लिया, और मुत्तहिदा अरब इमारात ने और कतर ने, दुबई ने, सऊदी अरबिया ने, और पाकिस्तान में दारुल कराची और मिनहाजुल कुरान और भेरा शरीफ अल करम इंस्टीट्यूट और बहुत से हैं इस तरह के हमारे रिलीजियस मुख्तलिफ थाट के मुख्तलिफ स्कूल ऑफ थाट्स के जो इस पर काम कर रहे हैं। और इससे पहले मदारिस वालों में जो लोग पढ़ते हैं एक्चुअली वहाँ क्योंकि हुकूमत की सपोर्ट ज़रा कम होती है तो अपने वसाइल में वो काम कर रहे होते हैं। तो जब उन्होंने देखा कि इसमें बहुत स्कोप है और हमें काम करने की ज़रूरत है, एक पूरा सिस्टम है ये इसको डेवलप करने की, तो इवन मदारिस ने भी इसके अंदर डिप्लोमा और मुख्तलिफ कोर्सेज शुरू करा दिए हैं। और उसमें यह कि अगर आपके पास दर्स निज़ामी की डिग्री है और ये डिप्लोमा है तो बैंकों में उनके लिए बड़ी अच्छी जॉब्स। डॉक्टर साहब मसला ये है कि जो बेसिक्स हैं जो कुरानिक वर्शन है या उसमें हदीस हैं या दूसरा लिटरेचर है इस्लामिक में, उसकी जो बेसिक्स हैं उसको सारे लोग जो है मेरा ख्याल है रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। कोई आप बता सकते हैं कि कोई ऐसा सॉलिड रिसर्च वर्क हुआ हो जिसकी बुनियाद के ऊपर ये काम आगे बढ़ सकता है? बिल्कुल, इस पर बहुत सी किताबें अरब दुनिया में, इजिप्ट ने, सऊदी अरब ने, कतर ने बाकायदा इस पर बेशुमार किताबें आ चुकी हैं। और कराची में हमारे बहुत से उलमाए किराम ने जो मदारिस के बड़े एक्सपर्ट हैं और नामी गिरामी लोग हैं, तो तकी उस्मानी साहब दारुल कराची के, वो दुनिया में एक पाकिस्तान के एक एक्सपर्ट समझे जाते हैं और उनको इनवाइट भी किया जाता है। इसी तरह डॉक्टर सैयद अब्दुर्रहमान शाह साहब हैं जो टेक्सला यूनिवर्सिटी में, वो इस पे एक अथेंटिक पर्सनालिटी हैं इस फील्ड के अंदर। तो मतलब ये है कि बहुत से इदारे काम कर रहे हैं और इंशाअल्लाह जो उसके जो हर्डल्स हैं, जो मुश्किलात हैं, उसका सलूशन पेश कर रहे हैं। ज़ाहिर है कि सिस्टम एक तवील अरसे से जो राइज है उसके नेमुल बदल में जो हर्डल्स जो चीज़ें आ रही हैं, उलमाए किराम उनके थिंक टैंक उस पर काम कर रहे हैं ताकि वो बेहतर से बेहतर अंदाज में काम कर सकें। मैं समझता हूँ कि वो एक मुहावरा है कि जब आपके सामने दो बुराइयाँ हो, एक बड़ी एक छोटी, तो छोटी को आप एडप्ट कर लें। मैं ये समझता हूँ कि ना होने से होना बेहतर है, अगरचे टाइम लगेगा, लेकिन इंशाअल्लाह पूरी दुनिया जो है वो आज चाहती है एक ऐसा निज़ाम हो इसमें लोगों का इस्तेसाल ना हो, लोगों का सरमाया ना डूबे, लोगों के साथ धोखा ना हो। और फिर क्योंकि ये इस्लामिक कॉन्सेप्ट है सूद से पाक मुआशरा,
तो ये तमाम इस्लामी दुनिया की और पाकिस्तान एक इस्लामिक रिपब्लिक है, उसकी तो ये अव्वलीन ज़िम्मेदारी है कि वो इस पर दिन रात काम करके इस इशू को, ये बड़ा आसान होगा पाकिस्तान और मुस्लिम उम्मा पर कि अगर ये मसला सोल्व हो जाता है। जी, डॉक्टर इहाब अल-शामी, प्रोफेसर Shahid has talked about the literature created on Islamic banking and this interest-free economy in Pakistan and in Egypt. So what kind of literature recently has been produced by your university and other Egyptian scholars? Is there some precious research that can be beneficial for other countries, Absolutely. especially in Pakistan? Yes, absolutely. My university is working on a very important initiative, which is standardize the transactions for the Islamic products. Part of the issue that the Islamic products are not in common a lot on the market, whether in Pakistan or Egypt or even United States, that we don't have a standard document for each product. So we have been working with the Federal Reserve in the United States, with several banks in the United States, several lawyers, to produce a standard set that can be acceptable for the central banks in various countries and to banks as well. So you are visiting Pakistan nowadays. So do you have some plan to sign some MOU with the universities and banks on the same subject? Well, alhamdulillah, thanks God, we actually had, I want to say 8 or 9 MOUs with several universities. Talon Institute. Talent Institute, University of Lahore, many other universities. Yeah. So this is good news from your side. डॉक्टर इजाज़ कुरैशी साहब कि डॉक्टर शाहिद साहब ने भी बताया कि हमारे पास बहुत अच्छा लिटरेचर मौजूद है और उसकी जो है वो डॉक्टर इहाब अल-शामी उन्होंने भी बताया कि भी लिटरेचर मौजूद है, उसकी डेफिनेटली ट्रांसलेशन जो है वो मौजूद होंगी। फिर हडल क्या हैं, क्या हडल्स हैं पाकिस्तान में कि हम इस्लामिक बैंकिंग को जो है वो एक सक्सेसफुल मुकाम नहीं दे पा रहे? I think the biggest hurdle is awareness about the product. Even though 99.5% population, I guess, is Muslim in Pakistan, the way we should create awareness about the products, it's not there. And as a human nature, once we get used to of something, we keep doing the same thing for the reason that we are feeling it very convenient. So I think until and unless there is an effort at the state level, things are not going to take the real shape if we are serious. I mean, if you look into Malaysia, Dr. Mahathir's government and the following government after him, they played very dynamic role in the growth of these products, and this is how it has grown big. Now, if you look into the UAE and other, particularly the state countries in the Middle East, a push is again from the top level, from the state side, because they know it will add lots of value in the life of common man, and states are realizing that the system we have adopted already from other powers, it's not working in our culture and system, and in fact, instead of getting some benefits, things are getting out of control, particularly economic system, the banking system, financial system, in fact, I should say. So this is really a serious issue at the moment, and push has to be from the state side. So people would once they are totally aware of the product, I mean, I strongly believe in the product, no question about it. वो जैसे hadith है कि if someone is taking interest, it is just like going into war against Allah Rabbul Izzat. So I mean, it is something very big. But the problem is, majority of us is not able to understand this something very big. अच्छा डॉक्टर साहब, आपने ये क्या है कि जो हमारे यहाँ अवेयरनेस नहीं है, लेकिन जहाँ पे जिन फैक्शन ऑफ सोसाइटी में अवेयरनेस है तो वहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकानमी का प्रॉब्लम है कि जो हमारा जो रेवेन्यू सिस्टम है वो सारा जो है ना वो कोलैप्स होता नज़र आता है कि जो चीज़ें जो हैं अपने एसेट्स जो हैं उसको टैक्स
کے لحاظ سے اس کو چھپائے جاتے ہیں. تو یہ کس کے لحاظ سے آپ اس کو کہیں کہ جہاں پہ اویئرنیس موجود ہے وہ کیا کر رہے ہیں؟ It's a very tough question, and I will give a diplomatic answer to this. I think جو اصل پرابلمز ہیں جب تک ہرڈلس کو ڈسکس نہیں کیا جائے گا کیسے اس I چیز کو؟ think there is a trust issue between state and public, particularly in the third world. If I look into my own country, I have met many people, many very good businessmen, and they strongly believe that we must not be paying tax to the state. Yes. And they strongly believe that we should be spending the money with our own hands in the local community wherever we feel it's needed. Now, it is definitely against the state government, and this is where the trust come. But I know in the US, یہ جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے یہ اس کو کیسے ہم بریج کر سکتے ہیں, کیسے اس کو ختم sir, state has to come up with and play the role of a big brother. Like say in the US, why everybody is paying the taxes? The reason people know the services are there. You get unemployed, after 3 months you start getting the benefit from the state. Okay, so you do not have money to pay the university fee, get financial grant from the local banks, from the institution, so available. So this is until and unless we create this kind of culture where general public knows that state is going to take care of us in all kind of situations, things are not going to change. جی ڈاکٹر اعجاز صاحب کہ آپ نے ایک بڑی ایک خوبصورت پہلو جو ہے وہ سوسائٹی کا انہوں نے کیا ہے. ہماری یونیورسٹیاں کیا کر رہی ہیں اس موضوع میں؟ کوئی ریسرچ ایسی کوئی کر رہی ہیں کہ جو ان ساری چیزوں کو پوائنٹ آؤٹ کریں, یہ ساری ہرڈلس کو, اور ان کا جو برجنگ ایلیمنٹس ہیں ان کو سامنے لے کے آئیں کہ ہاؤ وی کین کاؤنٹر دس پرابلم؟ میں اس کا جواب دیتا ہوں. اس سے پہلے جو آپ ہرڈلس کی بات کریں, جو رکاوٹیں ہیں اس کے کیا اسباب ہیں, کیا مشکلات ہیں. ایکچولی ہماری جو اکانومی ہے, معیشت ہے, وہ فری نہیں ہے. فری اس میننگ میں کہ وہ سب کسی اور جگہ سے ہینڈل ہوتی ہے, اور پھر یہ کہ ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ ہم قسمت بدل دیں گے ملک کی, ایک ہمیں موقع نہیں. آپ دیکھیں جو ایگریکلچر ہے وہ اس میں دے آر انڈیپینڈنٹ ٹو سیل دیئر پروڈکٹس, اور دوسری جتنی بزنس مین ہیں اس کے کسی قسم کی نہیں ہے. تو آپ اس کو لحاظ سے دیکھیں نا کہ ایک میسز کی طرف سے دیکھیں کہ وہ کیسے پروڈکٹس کو آگے لے کے آ رہے ہیں اور مارکیٹ کو کر رہے ہیں. تو اس کو بھی سامنے رکھتے ہوئے سسٹم کی ضرورت ہے. ہر چیز کو جب بھی آپ مارکیٹ میں لانچ کرتے ہیں اس میں صرف پبلک ہی کی رسپانسبلٹی نہیں ہے, بلکہ جب تک حکومت نہ کرے اس سسٹم کو لانے کے لیے کوئی اس میں کشش, یا یوں کہہ لیں کہ لوگوں کو آگاہی شعور نہ دے, جب تک وہ لوگوں کے اندر وہ چیز نہیں پیدا ہوتی. اور دوسرا جو ہے وہ اس معیشت کے, کیونکہ یہ کہ آپ ایک سسٹم کے خلاف جا رہے ہیں. اب اس سسٹم سے بہت سے سسٹم ملے ہوئے ہیں. جب بھی آپ کوئی نئی چیز معاشرے میں پیش کرتے ہیں, کوئی نیا نظریہ پیش کرتے ہیں, تو آگے بہت ساری رکاوٹیں, مشکلات آپ کو ہوتی ہیں. پھر ان سے نکلنا کیسے ہے, یہی حکمت عملی طے کرنی ہے. دیکھیں گورنمنٹ جو ہے وہ جو کوئی حکمت عملی بتاتی ہے کوئی, اس کے پیچھے ایک پورا ایک تھنک ٹینک کام کر رہا ہوتا ہے. اس کے جتنے بھی پازیٹیو اسپیکٹس ہیں, اس کے نیگیٹو اسپیکٹس ہیں, اس کی فیزیبلٹی رپورٹ بنتی ہے اور اس کے بعد اس کو لانچ کیا جاتا ہے. تو یہ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میں اسی لحاظ سے آپ سے کویشچن کیا تھا کہ ہماری یونیورسٹیز کیا کر رہی ہیں, کہ کہاں پہ گیپس کہاں پہ ہیں جس کو فل کیا جا سکتا ہے. ہماری یونیورسٹیز بہت اچھا کام کر رہی ہیں. آئی بی ہے وہاں, اسلام بینکنگ فائنانس, اور جو ہے وہ کراچی یونیورسٹی کا شیخ زید اسلامک سینٹر, اور اسی طرح پنجاب یونیورسٹی کا شیخ زید اسلامک سینٹر ہے, پشاور یونیورسٹی کا ہے. انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں باقاعدہ ایک ڈپارٹمنٹ ہے, پوری فیکلٹی ہے اسلامک بینکنگ فائنانس کے حوالے سے. ٹھیک ہے, وہ لیکن وی آر ٹاکنگ اباؤٹ کہ اف دیئر از پروڈکٹ, کہ ایسی پروڈکٹ ہو جس نے اس ساری چیزوں کو آسان بنا دیا ہے. پروفیسر ڈاکٹر ایہاب الشامی, وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دا ڈیفیشنسیز وی آر فیسنگ ناؤ اے ڈیز ان پاکستان. سو وی وانٹ ٹو نو if there were some problems in Egypt or in USA in introducing Islamic banking, and how you countered, how you blocked these deficiencies, how you solved this problem? Well, there is definitely deficiency in Egypt as well as United States. I think I'm going to go back to Dr. Ijaz's answer that we need to educate the public about this, about Islamic products or interest-free products. I think we need to educate the public as well as the banks. Offering these products into the market will definitely cover and cover
the deficiencies that we are having. So American scholars are very interested and they are producing and they are working day and night on their specific field. So your university or other universities have such departments who are making tremendous contribution on Islamic banking? I'm not aware of any other university, and I think our university is the only university that offers the Islamic banking and finance program. But if you conduct some research on some specific topic, that's different so definitely story. Yes. You are supposed to consult documents or other secondary and primary sources. Yes. So your university must be aware of the publications. Well, there are a lot of publications, particularly from scholars actually that originally from Pakistan, and probably the second country will be Egypt. They have tremendously contributed a lot of fatwas and description and explanation and product idea about the Islamic finance into the market in the United States. So how you tackle this problem of sectarian, some ulama or some Islamic scholar or Muslim scholars give verdict pro and against such drive. So how you can counter that? I think open communication. We have to have a lot of international conferences between the scholars that reside or live in the United States, as well as reaching out to other countries. I think it's very, very, very important. I want to say I don't see a lot of initiatives. Most recently, maybe because the effect of the COVID and the war in Ukraine, that eliminated a lot of travel and things like that. But I think we need to push it by the state, like Dr. Ijaz said. It needs officials to push these initiatives into the system. डॉक्टर कुरैशी साहब बड़ा एक अहम एस्पेक्ट की तरफ इशारा किया है कि कॉन्फ्रेंसेस जो डायलॉजिकल रैशनल है उससे हम ये चीज़ें प्रॉब्लम जो है वो हल कर सकते हैं और हमारी जो मुस्लिम हिस्ट्री है उसको हम देखें तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जिनको हल किया गया है वो इन्हीं जो है वो कॉन्फ्रेंसेस के ज़रिए और डायलॉग के ज़रिए मुकालमे के ज़रिए हल किया गया है। तो इस सिलसिले में जो आपका टैलेंट इंस्टीट्यूट ऑफ हायर स्टडीज़ है उसका क्या प्लान है और दूसरी पाकिस्तान की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी कॉन्फ्रेंसेस आपको नज़र आ रही हैं? कोई स्पेसिफिक इस फील्ड के ऊपर कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं या डायलॉग हो रहा है, कोई मुकालमा चल रहा हो? जी Professor, Higher Education Commission of Pakistan has given us permission at the moment to launch 3 programs, and those 3 programs are business, computer science and media studies. So at the moment we are focusing on all these 3 programs. So in the future, inshallah, we will go for specialization. It is my plan at the moment that those students who are doing BBA, Bachelor in Business Administration, they must have finance specialization. And in finance specialization, we will give them the option to go for Islamic finance if they want, Islamic banking and finance if they choose to. So this is the plan. So Talon Institute would really look into applied research. I strongly believe we need to solve our local problems. The research that's going on in Minnesota, in New York Stock Exchange, or Chicago Mercantile Stock Exchange, or Silicon Valley, that's a different research. We have different environment. I mean, it took me almost 9 years to understand that we need to focus on this economy. लेकिन डॉक्टर साहब उसमें ये है कि जितने भी जो वेस्ट की तरफ से थॉट्स आते हैं, सिस्टम आते हैं, फॉलो तो हम उन्हीं को कर रहे हैं, बेस उन्हीं को बनाते हैं, तो फिर आपको ये है कि ये जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं या इमर्जिंग इकोनॉमीज़ हैं उनमें आपको बेस तो उन्हीं को बनाना पड़ता है, मॉडल तो उन्हीं को बनाना पड़ेगा, तो फिर आपको उसी लिहाज से जाना पड़ेगा। सर मैं ये देख रहा हूँ कि लेट्स से just 1 kilometer from my institute there is a shala market and trillions of dollars worth of business is taking place in that market on daily basis. They're the supplier of all Pakistan from here. Okay. We are not trying to understand their model where $1 trillion worth of business is taking place. What we are trying to do, sitting here in Lahore, we are looking into Walmart, we are looking into Costco, we are looking into Marks and Spencer or Harrods or Tiffany's. So I mean,
how we can really solve our own problem or promote our own economy if our kids are not aware of our own local business models. I mean, now at this part of age, I realized that I wish during my undergraduate program someone has taken me to Sharjah market. I could have done much better financially. I would probably have dropped my idea to go for PhD, and I would probably have bought a small shop over there in Sharjah. डॉक्टर शाहिद साहब, जो डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब तो ये है कि अभी तक जो हमारी एग्जिस्टिंग इकोनॉमी के जो मोड्स हैं उनको भी स्टडी नहीं किया गया। एक्चुअली ये जो अभी इंटेलेक्चुअल जो हमारा तबका है उस तक तो पैगाम जहाँ प्रैक्टिस है स्टार्ट हो गई है काफ़ी अरसे से। मिसाल के तौर पे दुबई इस्लामिक बैंक है, कतर इस्लामिक बैंक है, इसी तरह मीज़ान इस्लामिक बैंक है। इवन अब जो दीगर बैंक हैं स्टेट बैंक की बड़ी वाज़ेह पॉलिसी उनके, बल्कि उनको ऑर्डर आया उनको कि आप इस्लामिक बैंकिंग का शोबा कायम करें। तो आस्ता आस्ता हम उस तरफ जा रहे हैं इंशाल्लाह। नहीं, एक होता है नाम, एक होता है कि फिर जो आप पैसे लेते हैं वो सर्विसेज के नाम के ऊपर, प्रोसेसिंग फ़ीस के नाम के ऊपर, आप उससे जान नहीं छुड़ा पा रहे। तो इसके लिहाज से आप क्या आप दुरुस्त कह रहे हैं। बहुत से लोगों का एतराज़ है कि आप एक जो दूसरे बैंक हैं वो यानी एक मिसाल देते हैं कि आप एक कान जो है इस तरफ से पकड़ रहे हैं उस तरफ से पकड़ रहे हैं की बात है, लेकिन ये इस तरह है नहीं। इस तरह हमें नज़र आता है अंदर बहुत ज़्यादा चेंजिंग तब्दीलियाँ आ रही हैं। जिस तरह आपने कॉन्फ्रेंसेस का जिक्र किया, सेमिनार, उनका मकसद ये होता है कि जो मुश्किलात हैं वो उन इशूज़ पे वो कॉन्फ्रेंस करवाते हैं ताकि उलमा की जो एक्सपर्ट इन फील्ड के उनकी आरा की रोशनी में उन मुश्किलात को, उन हर्डल्स को सॉल्व किया जा सके। सो डॉक्टर इहाब शामी, सो कैन योर यूनिवर्सिटी ऑफर सच कोर्सेज or fund some conferences or seminars in collaboration with the Pakistani universities in future? Do you have some plan? Actually, we do have some plans to do that with the Talon Institute, and we are working. We have signed already MOU, and we will work on something that is coming very soon, inshallah. So what kind of models you were going to provide, and what kind of models you were discussing? Do you have any programs in your mind? We are going to work on two things, which I think they are the most important thing. Standardize the product and standardize the documentation to book these products. If we can standardize these into the Islamic finance market products, I think we'll explore very, very, very well. So, is there any interference from the government or state to sign MOU on these models you are suggesting? No, there is no. There is no barricade. Yes. Okay, that's wonderful. डॉक्टर एजाज कुरैशी साहब, अब देखिए कि हमारी जो सोसाइटी है उसमें यूनिवर्सिटीज़ हैं, आवाम की जो है उनको एजुकेट अवेयरनेस देनी है, और तीसरा एक स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट है वो मदरसा जो रिलीजियस एजुकेशन है। इनको कोलैबोरेट करने के लिए, कि कंसेंसस क्रिएट करने के लिए, जो इस्लामिक बैंकिंग है या इंटरेस्ट फ्री इकानमी है उसको इंश्योर करने के लिए आपके पास क्या तजवीज़ है? बिकॉज दिस इज़ एंडिंग मोमेंट्स ऑफ आवर प्रोग्राम। एज ए रेक्टर, आई एम लुकिंग इनटू टू थिंग्स। Madrasa students are totally isolated from the mainstream society, unfortunately. It is not supposed to be there. They are there to learn about Quran, about Sunnah, about Hadith, whereas in the society, unfortunately, they are put it on one corner. Okay. And the major reason behind is economic reasons, because they are not very rich, they are absolutely poor. So this is how what I have seen society is looking into, unfortunately. Now, as a Talon Institute, I have a plan, inshallah, that I will pick up in this neighborhood, in our area where we are based. There are 6 or 7 madrasas where 200, 300 students are residing in each madrasa, going for memorizing Holy Quran, Hifz, to be Hafiz. So my plan is that from each madrasa, inshallah, I will pick up 2 students in BS software engineering program, and I will teach them how to program. And if I strongly believe, if I can send 2 very good programmers to each madrasa, all Hafiz will be very good programmers. This is wonderful. This is one thing. Yes. Second thing that I am planning to do, sir,
bring Maulanas from the mosques and teach them English, English spoken at least. Because once they start communicating with Americans, with Brits, with all English speaking countries, with Western nations, their perception will change about the West, what they have at the moment. Since they are not able to communicate, that's a big barrier. So that's where the gap is, and that gap is creating lots of disturbance in the society, for us, for them as well. So their economic level, thirdly, will go up. Once they are able to communicate and they are able to design, they are graphic designer, they are programmer, they will be making tons of money, and all your financial deficit of the country will disappear. That's great. Professor Ihab, we will welcome if you have some message for Pakistani scholars, academia, students, and madrasa religious scholars. Well, for our scholars here in Pakistan, I need them to unify. Give us just one opinion that we can follow. I think they need to sit down, work their things out, different madhahib, different opinions should be unified into one. That will make their lives as well as the public life a lot easier. जी शुक्रिया नाजरीन, हमारे साथ आज प्रोफेसर इहाब शामी साहब जो चांसलर हैं अमेरिकन इंटरनेशनल थियज़म यूनिवर्सिटी फ्लोरिडा USA में, वो हमारे साथ थे मेहमान। प्रोफेसर डॉक्टर एजाज़ कुरैशी, प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद हबीब साहब, इनका बहुत शुक्रिया। लेकिन एक दो चीज़ें जो बहुत ज़्यादा उन्होंने एम्फसाइज़ किया वो हैं डायलॉग, और जब तक मुकालमा नहीं होगा कंसेंसस क्रिएट नहीं करेंगे। ये एक बहुत बड़ा है कि इस्लामिक बैंकिंग को कामयाब कैसे बनाया जाए, इंटरेस्ट फ्री इकानमी को पाकिस्तान में कैसे इंट्रोड्यूस करवाया जाए, एजुकेट आवाम को कैसे किया जाए, ये मुख्तलिफ़ कंपोनेंट्स हैं। और अगर इनको मदरसा और जो हमारी रियासत है, हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं और आवाम है और जो बिज़नेस कम्युनिटी है, जब तक इनका कंसेंसस क्रिएट नहीं करेंगे तो हम इसमें कामयाबी हासिल करना हमारे लिए मुश्किल होगा। उम्मीद है कि जो आज चीज़ें इन स्कॉलर्स ने पॉइंट आउट की हैं, हम इनके ज़रिए इस डेफिशिएंसी को कवर करेंगे और पाकिस्तान को खुशहाल बनाएंगे। आपका बहुत शुक्रिया।